Serial number 2, Mr. Bachchanji Ojha. My Lord, on last occasion I argued this case, and your Lordship told me to, on the point of contradiction, brought some judgment, my Lord. I have brought, my Lord. My Lord, this is a case. No, we forgot what had happened on the last occasion. Case, my Lord, in which the appellant was convicted under section 376D, my Lord. 376. Now the age of the victim is more than 40 years, my Lord. She is mother More of than? Yes, my Lord. Age of the victim is? More than 40 years. Yes. And she is mother of 3 children, my Lord. His? And she said in the FIR, my Lord, she went along with the appellant, my Lord. Yes, where is the FIR? ये कहाँ है? रिकॉर्ड दीजिए इसके एविडेंस का. Yes. For picking onion, my Lord. Yes, 1 minute. In the night at night. One minute. We understand slowly. Go with our pace. Yes. You may be knowing entire facts of your client's matter. We are not. Yes. This is FIR lodged by the victim. Yes. What from this FIR? What do you want to show? My Lord, I want to show some contradictions in the 8/5/2017. Yes. And others. My Lord, the victim. Which portion of the FIR? On the point of returning. Which portion of the FIR should be seen by us? Which portion of the FIR? Which in the FIR, my Lord. Yes. He told 2 persons' name. One the appellant. Read the concern. And the other is the owner of. FIR पढ़िए या जे FIR पढ़िए कहाँ पे है वो FIR में पढ़िए फिर से कहाँ पर है वो. Yes. प्याज छाटने के लिए जल्दी चलो, इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है. इस वजह से पंकज मंडल के कहने पर मैं गाड़ी की केबिन में बैठ गया. गाड़ी में पहले से एक व्यक्ति था जो अपने को गाड़ी मालिक बता रहा था, जिसे के कारण मैं उसका चेहरा नहीं पहचाना, अंधकार के कारण नहीं पहचाना. गाड़ी पर बैठने के बाद पंकज मंडल ड्राइवर ने गाड़ी को महंत बाबा स्थान के सीधे मैला नदी के पश्चिम किनारे पर रोक दिया. मुझे गाड़ी पर से उतरने के लिए बोला. मैं जैसे ही गाड़ी पर से उतरी तो दोनों व्यक्ति मुझे जबरन निपट करने लगे. तो मैं अपने बचाव में पीछे चिल्लाई, लेकिन सुनसान जगह के कारण मेरे बचाव को कोई नहीं आ सका. इसके बाद पंकज मंडल ने गाड़ी के नीचे ले जाकर मेरे साथ जबरन रेप करने लगे. इसके बाद गाड़ी मालिक मुझे नया देखने नहीं सकी, उसने भी मेरे साथ जबरन रेप किया. तो 2 आदमी बुजुर्ग इसमें अपेरेंटली आता है. इसमें एक का नाम बताती है, एक का नाम नहीं. इन द 164 स्टेटमेंट, my Lord, she named just other person, my Lord, छोटे लाल यादव. और इन द डिपोजिशन she said कि मैंने छोटे लाल 164. Where is 164? in 164 statement, my Lord, that is here, my Lord, certified copy, and that is the exhibit 9. 164 was recorded on. So in 164 she has named another person also. Another person. तो मेरा यही कहना है कि अगर छोटे लाल यादव था तो उसको FIR में नाम लेना चाहिए था. अगर नहीं था तो वही स्टेटमेंट उसको 164 में की गाड़ी मालिक थे कुछ. तो दोनों डिफर. और इन आर डिपोजिशन शी सेड कि मैंने छोटे लाल यादव का नाम अपने भाई के कहने पर लिया. कहाँ? चंपा देवी. यस, 1 मिनट. डिपोजिशन हुजूर. हाँ, 1 मिनट. डिपोजिशन में हुजूर है. यस. प्लेस ऑफ ऑकरेंस से लौटने के बारे में हुजूर 4 तरह का स्टेटमेंट है इनका. 4 तरह का. फर्स्ट स्टेटमेंट हुजूर, द विक्टिम इन हर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC. 1 minute. हाँ, यस. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेटमेंट? She said, my Lord, that she went along with accused persons at 8 PM on 7/5/17 and returned 9:30 FIR 9:30 बजे. ये हम अभी 164 का बोल रहे हैं. कि 8 बजे गई और 4 बजे लौट के आई. 164 में कहती है कि 8 बजे गए और 4 बजे लौट के आ गई सुबह में. 1 मिनट है. 8 बजे रात को 8 PM. हाँ. FIR में 9:30 PM. और सुबह में 4 बजे आ गई. कहाँ है? सुबह के 4 बजे. चलो जबरदस्ती दोनों मिलकर उधर. उसके बाद पहले
पंकज मंडल फिर छोटे लाल मैंने तो पूरा उधर में छोड़कर गया तो भाग गया। मुझे अगले दिन 2 बजे रात में 4 बजे इन FIR सी सेट कि 9:30 बजे गई और वहां पर सेंसलेस हो गई और इन दी मॉर्निंग सी अवोक एंड केम हर विलेज बाय वॉकिंग एट 2 PM। दिन के 2 बजे आई घर। FIR में कहती है कि वहां बेहोश हो गई और सुबह वहां से चलना शुरू की तो 2 बजे घर पहुंची 2 PM। ये FIR में है। यस। अब माया देवी जो इसकी भाभी है हुजूर PW10, वो कहती है कि हमको ये बताई विक्टिम आई हैव PW10 Maya Devi, own Bhavi, wife of Sridhar Mandal, said in her deposition in para 12 and 13 that victim Champa Devi came at 12 PM. Para 12 and 13 of PW10. माया देवी। हु इज माया देवी? सिस्टर इन लॉ। भाभी है उसकी, श्रीधर की वाइफ। हाँ, अपनी भाभी है। हाँ, पैरा 12 and 13 रात को 12 बजे। हाँ, कि came at 12 PM in the night and it is the accused appellant left her by pickup van। 12 बजे रात में यही छोड़ गया अपीलांट गाड़ी से, और उसमें साफ कहती है कि ये विक्टिम ने हमको बताया। यस। अब हुजूर पारा 26 ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द चंपा देवी विक्टिम, पारा 26 में। पैरा 26 जी। तुरंत बाद में 8:30 बजे घर घटना के तुरंत बाद 8:30 बजे घर वापस आ गई। शी इज PW चंपा PW1 चंपा देवी विक्टिम, घटना के तुरंत बाद 8:30 बजे घर आ गई। अब हुजूर एक बात हुजूर ने उस दिन कही थी। 1 minute, what was the time of leaving the house as stated by her in her evidence? जाने का टाइम नहीं बता रही। हाँ, यस। हाँ, अब हुजूर कि हमने कहा था कि ये पहले भी इनके साथ जाती थी काम करने के लिए, तो हुजूर ने कहा था कि अगर दिखा दीजिए तो मैं भेज दे दूंगा। हुजूर इन द FIR शी सेड अपीलांट केम एंड टोल्ड लेट अस प्रोसीड सून फॉर एक मिलर। FIR में बोला है ये एंड शी वेंट अवे बिकॉज इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है। FIR में कहती है 1 मिनट, इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है। इस वजह से पंकज मंडल के कहने पर मैं गाड़ी के केबिन में बैठ गई विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर एक जगह कहती है हुजूर द डिपोजिशन ऑफ विक्टिम इन पारा 5 सेड पंकज मंडल मेरे गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है, और इसके साथ मैं बराबर काम का नहीं करती हूँ। बराबर काम नहीं करती हूँ यानी कभी कभी करती हूँ। कहाँ पैराग्राफ? इन पारा 5 विक्टिम के पारा 5 में यस। वो कहती है कि बराबर नहीं, कभी कभी करती हूँ। आखिर की ये बात नहीं कहती है लेकिन उसका अर्थ ही निकलेगा। और पारा 14 में हुजूर कहती है कि मुझे आवेदन पढ़कर नहीं सुनाया गया है, मुझे नहीं पता कि आवेदन में क्या लिखा हुआ था। और 18 में हुजूर ने देखा ही कि मेरे भाई ने छोटे लाल का नाम बताया था, तब मैंने बताया। नारायण मंडल हुजूर जो इसका हस्बैंड है जो PW2 है पारा 4 पंकज मंडल केवल धर पकड़ किया। ये अपने हस्बैंड को बताई कि उसने कहाँ पढ़ रहे हैं? नारायण मंडल हुजूर PW2 है पारा 4 में। पैरा 4 ऑफ नारायण मंडल। नारायण मंडल नारायण मंडल हस्बैंड है, इसका अपना हस्बैंड है। कितना PW है वो? ये PW4 हाँ PW4 सॉरी PW4 एक मिनट, PW4 है गौतम नहीं, PW4 नहीं है। एक मिनट, वो तो हॉस्टाइल होगा। एक मिनट PW2 ही है। नारायण मंडल PW2 है। PW2 हाँ पारा 4 में बोलता है। 1 मिनट PW2 पारा 4 पैरा 4 और पैरा 14 दोनों में ये बात बोलता है। यस। हाँ, और हुजूर पारा 20 में कहता है नारायण मंडल PW2 मेरी पत्नी से मंगल मंडल और श्रीधर मंडल ने यह केस कराया था। हाँ, वो भाई है दोनों लोग। इन्हीं लोगों ने उसके साथ मारपीट भी किया था, दोनों के साथ, विक्टिम के साथ भी मारपीट किया था और उसके साथ भी। इसके लिए अलग से केस। His brother and who is this another person? और श्रीधर भी उसका भाई है। Both are brother. बोथ आर ब्रदर।
21 में हुजूर कहता है यही विटनेस PW2 श्रीधर और मंगल चोर है, कुछ भी कर सकता है। हुजूर 2 डिसीजन हम लिए हैं, रिपोर्टेड है हुजूर। क्या 2015-1 PLJR सुप्रीम कोर्ट 42। नहीं, वो बेल में हम जजमेंट नहीं देखते। जजमेंट क्या है? कब छोड़ दिया जाए? नहीं, जजमेंट इज अप्लीकेबल, अब रेशियो इज ओनली अप्लीकेबल, फैक्ट्स और नॉट। व्हाट इज द रेशियो विच यू वांट? नहीं, हुजूर ने कहा था कि अगर कोई हो तो वो 10 साल का बोला था मैंने, शायद 10 साल के बारे में। जजमेंट इन क्रिमिनल ट्रायल is hardly relevant in any case. Only what is applicable of the judgment, ratio is applicable. Yeah. So for ratio, if you can show us that gang rape evidence is to be appreciated in this manner, then that is applicable. But otherwise each case goes on its own facts. Decision is attributable to fact of that case. Yes, ma'am. Ratio is applicable to all cases. So Yes. if you want to cull out some ratio, then point out ratio. Otherwise on facts each criminal case is different. और बेल में ऐसे कोई डिसीजन नहीं, बेल में तो छोड़िए, आप कोई भी केस में क्रिमिनल में जजमेंट साइड करना, ये बात मुझे नहीं समझती, क्योंकि हर क्रिमिनल केस के फैक्ट्स अलग रहते हैं। जजमेंट इज अप्लीकेबल, व्हाट पोर्शन इज अप्लीकेबल? रेशियो। यस, व्हाट इज दिस ingredients of common object? What are the ingredients of common intention? This, to that extent, is okay, but on facts, what each evidence has to be Now, appreciated. my lord, On the contrary, in rape cases, what is On the basis what of is the fact, ratio? Evidence only- is to be appreciated in broader perspective. Minor inconsistencies are to be ignored. This is the ratio in rape case, and more seriously are such type of cases, gang rape. Anyway, anything else? No, ma'am. What is the doctor says? What doctor says? Doctor, nothing was found, my lord. Doctor is my lord. नहीं, फिर तो कुछ नहीं. हाँ, yes. No injury, nothing was found. Yes, and what is the result of this trial? 2 persons were put up for trial? Or? No, only one. Both were not sent up. पुलिस फाइनल दे दिया दोनों के अगेंस्ट में. No, ये इसका क्या हुआ, छोटू लाल यादव? नहीं, वो सेंटअप ही नहीं हुआ. चार्जशीट? नहीं, नो चार्जशीट. वो दोनों को छोड़ दिया. चार्जशीट है दोनों कहाँ? एक ही आएगा, एक पंकज मंडल, एक छोटू यादव. वहाँ नहीं, जैसे 2 आदमी को एक्यूज बनाया FIR में, ऑनर को. कौन हो सकता है कि पंकज यादव, पंकज ये मंडल और छोटे लाल दोनों जगह अलग अलग नाम ले ली ना. 164 में ली छोटे लाल यादव का. हाँ, और FIR में ली गाड़ी के ऑनर का, पिकअप वैन के ऑनर का. वो दोनों अलग अलग आदमी है. एक मिनट, थोड़ा सा ये पॉइंट नहीं समझा मुझे. ये FIR में किसका नाम लिया है? FIR में मनीष नाम है, उसके गाड़ी के ऑनर. FIR में कोई ओनर, मतलब ओनर का नाम नहीं लिया है, केवल ऑनर का ही है. अनआइडेंटिफाइड, केवल ऑनर. उसको आइडेंटिफाई कर रही 164 में छोटे लाल यादव. हाँ, और 164 में छोटे लाल का नाम लिया है. हाँ, जिसको तो पुलिस फाइनल फॉर्म कर दिया, सेंटअप नहीं किया. And that was also accepted by. Unidentified person is being described as owner of the vehicle. Okay? Yes, sir. गाड़ी मालिक. Yes, that's all. Yes. My lord, the position of victim, my lord, for is sufficient for conviction, my lord, Yes. under section 376, my lord. Yes. Okay. This is first bail application. हाँ, फर्स्ट. This is say a bail application, or in appeal itself it is prayer. बेल अपील में ही प्रेयर है बेल का. Yes. और first time बहुत This हो रहा है. appeal has come up for consideration of request of bail, request of suspension of sentence and release of the appellant on bail during pendency of the appeal. First of all, और 5.5 साल से हुजूर कस्टडी. that is not relevant in gang rape cases. Even if 10 years, no consideration. First of all, the appellant is convicted of the offence punishable under section 376D of the Indian Penal Code, and he is sentenced to suffer imprisonment for life apart from imposition of fine of ₹5,000, and in default thereof to undergo further imprisonment for 6 months. First of next para, heard. The learned counsel appearing for the applicant, appearing for the appellant. First of, he argued that
the evidence, evidence adduced by the prosecution is contradictory and untrustworthy. Full stop. The prosecutrix has changed her version from time to time for suiting the case of the prosecution. Full stop. Her version is not supported by medical evidence or evidence of her husband. Full stop. It is further argued that evidence on record suggests that the prosecutrix was set up for lodging the false FIR against the accused, against the appellant. Full stop. It is further argued that though it is alleged that the prosecutrix was subjected to gang rape, comma, the another person who allegedly raped the prosecutrix is not even charge sheeted by police. Full stop. Hence, the learned trial court has committed error in convicting the appellant of the offence punishable under section 376D, capital D, of the Indian Penal Code. Full stop. As against this, the learned APPA argued that evidence of the prosecutrix is sufficient to convict the appellant. Full stop. Next para, we have considered the submission so advanced. Full stop. We have also perused the record and proceedings. Full stop. The case held to be proved against the appellant is that of gang rape. Full stop. It is well settled that in such cases, evidence of the prosecution is required to be considered in broader perspective of the case of prosecution by ignoring minor inconsistencies. Full stop. Similarly, it is also well settled that in such cases, comma, if the version of the prosecutrix is truthful, then it need not be supported by medical evidence. Full stop. Next. In the case in hand, the prosecutrix has lodged the FIR on 8/5/2017, alleging that the incident took place in the night intervening 7/5/2017 and 8/5/2017. Full stop. She had reported to the police that she boarded vehicle driven by appellant Pankaj Mandal for going to do labor work of grading permitted to leave grading onions. Full stop. She stated that another unknown person was sitting in the vehicle who may be owner of that vehicle. She further reported that she was taken to the bank of Maina River where she was subjected to rape by appellant Pankaj Mandal and another unidentified accused. Full stop. That is how the crime in question came to be registered against two persons, including appellant Pankaj Mandal. Full stop. Next para. In her statement under section 160, next para, in her statement under section 164 of the CRPC made to the learned judicial magistrate, comma, the prosecutrix has stated that she was subjected to gang rape by Pankaj Mandal and Chotulal Yadav by taking her in the vehicle on the pretext of loading onions in the vehicle. She has stated to the learned judicial magistrate that both these persons have committed rape on her, and as she is a handicapped lady, she returned to her house at about 4 a.m. In the FIR, she has
stated to police that she was taken at 9:30 p.m. of 7/5/2017 and she had returned to her house at 2 p.m. of the next day, that is 8/5/2017. First of all, unidentified person became identified. 1. In the statement under section 164 of CRPC made on 16th May 2017 by the prosecutrix. First one. The prosecutrix came to be examined as PW1. She has not stated time of taking her by the accused. First of all. However, she stated that by taking her by a vehicle near Stan of Mahant Baba, accused appellant Pankaj Mandal committed rape on her. First of in her evidence before the court, she has stated that one person was accompanying Pankaj Mandal, but she has not attributed any overt act to that person. Her evidence does not show any community of intention of that unknown person who was with Pankaj Mandal. In her cross-examination, the prosecutor has stated that she had told name of Chote Lal Yadav on the say of her brother. As stated earlier, the prosecutrix in her FIR has stated that she was taken at 9:30 p.m. and returned at 2 p.m. of the next, whereas in her statement under section 164 of the CRPC, she has stated that she was taken at 8 p.m. and had returned at 4 a.m. of the next day. As against this, PW10, who happens to be sister-in-law of the prosecutrix, has stated that the prosecutrix returned in the midnight at 12 p.m. In cross-examination, the prosecutrix has stated that the prosecutrix has stated that after the incident, she returned to her house immediately at 8:30 p.m. without full stop. She has not stated in her evidence before the court, the time of taking her by the appellant. Full stop. Next para. The case set out in the FIR is to the effect that the prosecutrix was doing the labor work of grading and loading onions for earning her livelihood, and therefore she had boarded the vehicle of the appellant at the time of the incident from her house. Her cross-examination also reveals that she was working with appellant Pankaj Mahato, though not regularly. PW2 is husband of the prosecutrix. As per his version, his wife had told him that appellant Pankaj Mandal had only caught hold of her and had embraced her. His evidence is to the effect that the prosecutrix has filed the FIR at the instance of her brothers Mangal and Sridhar. He described his brothers-in-law as thieves who can do anything. Next. This is the position of evidence appearing on record. First of all, the prosecutrix is not consistent in respect of her case of subjecting her to gang rape. So also the time of the incident. First, the prosecution has not explained as to why Chote Lal Yadav, named by the prosecutrix in her statement under section
of the CRPC is not charge sheeted. In substantive evidence before the court, comma, the prosecutrix has not attributed any overt act to some unidentified person who was in the vehicle. On these facts, one will have to examine at the time of final hearing whether the offence falls, the offence is punishable under section 376D of the IPC. Whether offence punishable under section 376D of the IPC is made out or not. Next para. Considering the nature of evidence available against the appellant, comma, for the reasons noted by us in the, we are of the opinion that the appellant deserves to be released on bail during pendency of the appeal filed by him. First, his substantive sentence of imprisonment imposed on the appellant is suspended and he is directed to be released on bail on executing PR bond of rupees 10,000 and on furnishing surety in the like amount till disposal of the appeal. The appellant should cooperate this court in expeditious disposal of the appeal filed by him. First, during pendency of the appeal, realization of the fine amount